So welcome you all to my YouTube channel Anjana's Education. Today I am telling you and I am briefly explaining you about the syllabus of plus 2 first year Arts, Science and Commerce, which is approved by CHSC Council of Higher Secondary Education Odisha. So the new syllabus is about to come, but we don't know much about it. But we are studying or we are discussing the previous syllabus. Actually, पूर्व syllabus अनुसार ही आमे से विषय में तुमको discussion करूची. And the new syllabus is about to come, but it is not yet published. ए पर्यंत publish है ना जेहेतु आमे पूर्व syllabus अनुसार ही पाठ पढ़िबा. I have already uploaded some videos which are there in the plus 2 first year Arts, Science and Commerce. English we are basically discussing. आमे इंग्लिश विषय कहवाक जाऊँ. इंग्लिश टॉपिक ही इंग्लिश सिलेबस ही मुझे आज आलोचना करने जाऊँ तुम सहित. सो एक्चुअली द बुक ऑफ इंग्लिश is divided into 4 parts: invitation to English 1, invitation to English 2, invitation to English 3 and invitation to English 4. So basically what we are going to study in the invitation to English 1, प्रथम पेपर रे कौन रही आमर invitation to English 1 रे prose एवं poetry. 5 pieces of proses we are going to study. 5टा prose आम पढ़ा से भली 5 pieces of poetries are there. 5टा poem भी रही से भली भाव रे. The first thing or the first topic which we are going to discuss is standing up for yourself, which is written by Yevgeny Yevtushenko. Writer होचुंदी Yevgeny Yevtushenko. तांको से लिखिथिबा text होची standing up for yourself. Next one is the legend behind a legend, a wonderful story. We will come to know about a tigress named Khayri. Khayri नाम को बाघुणी विषय जानिबा आमे. The legend behind a legend. हरिहरन बालकृष्णन जाकु लिखिचंती. Next we are going to discuss that is the Golden Touch, which is written by Nathaniel Hawthorne. It is a story. It is very unique story. The Golden Touch. It is आम कहवा गोटे क्षुद्र गल्प टाइप रो स्टोरी यहाँ लिखिं नाथानिएल हॉथर्न एंड इट टीचेस अस लेसन. आमको यह शिक्षा दे था किसी जिनस मनुष्यर आशा को लेकर केमती चरितार्थ होता है से विषय. इन लंडन इन -4 which is written by Louis Fisher. In London in -4 is completely based upon Mahatma Gandhi and his life and teachings. Actually he was there in London to attend the second round table conference which was going to be held in London. London रे हेबाक जाउथवा द्वितीय राउंड टेबल बा गोल टेबल बैठक रे से जोग देबा जाइतले एज ए सोल डेलीगेट बा आमे कहबा एकमात्र प्रतिनिधि भाव रे. एंड ही रिप्रेजेंटेड इंडिया से विषय पढ़िया महात्मा गांधी विषय. द नेक्स्ट टॉपिक बट नॉट द लिस्ट, द कैंसर फाइट फ्रॉम हिरोशिमा टू हस्टन व्हिच इज रिटन बाय रिसुको कुमाकी जे थिले जने कैंसर डॉक्टर एंड से लिखिचंती द कैंसर फाइट फ्रॉम हिरोशिमा टू हस्टन. इट इज आल्सो ए हार्ट टचिंग स्टोरी वी कैन स्टडी. नेक्स्ट आछे आमे इनविटेशन टू इंग्लिश 1 रो पोएट्री पार्ट को. पोएट्री रे कोन कोन अछि फेमस पोएम्स आर देयर रिटन बाय डिफरेंट राइटर्स. So the first one which is written by Robert Frost and what he has written, stopping by woods on a snowy evening. Stopping by woods on a snowy evening बोली करी तांको लिखिचंती poem. The one of the famous phrase is there known as and miles to go before I sleep बोली करी कही करी गोटे लाइन अछि and it defines the whole poem and the theme is based upon that. And miles to go before I sleep बोली कही करी गोटे sentence अछि जे बुझाय हमकु होल मीनिंग ऑफ द पोएम. से पोएम रो समस्त प्रकार थीम ता ऊपर पर्यवेसित. एंड माइल्स टू गो बिफोर आई स्लीप. नेक्स्ट आउची ऑफ्ट इन द स्टिली नाइट रिटन बाय थॉमस मोरे. नेक्स्ट वन इज द एंचकेप रॉक व्हिच इज रिटन बाय रॉबर्ट साउदी. देन टू माय ट्रू फ्रेंड एलिजाबेथ पिनर्ड. फिशिंग रिटन बाय गोपरंजन मिश्र एंड ओडिया राइटर. वी मस्ट रीड इट. ये हूँ बहुत इंटरेस्टिंग पोएम जोटा आम पढ़ा दरकार. रिटन बाय गोपरंजन मिश्र. सो दिस पार्ट इज कम्प्लीटली कही पारिबा ऑन प्रोज एंड पोएट्रीज. प्रोजेस एंड पोएट्रीज कविता आ पद्य आ गद्य कथा कह जाए. इनविटेशन टू इंग्लिश 2 को आसवा रही स्टोरीज प्लेज एंड बायोग्राफीज. द प्रथम टॉपिक हूँ द 3 क्वेश्चन रिटन बाय लियो टॉल्स्टॉय. नेक्स्ट वन आफ्टर 20 years by O. Henry. It is written by O. Henry. It is also a great story. The Open Window written by Saki. Next one we are going to discuss that is in the non-detailed study the one and only Houdini, a magician. The story of a magician we can come to know. आमे जानिबा को पाई परिबा जने magician विषय रे जहा द्वारा के लिखिचंती रॉबर्ट लाडो. देन आउची चाइल्डहुड जवाहरलाल नेहरू रिटन बाय चाइल्डहुड
written by Jawaharlal Nehru, and another topic but not the least, marriage, which is written by Dr. Rajendra Prasad, former president of India, ଭାରତର ରାଷ୍ଟ୍ରପତି ଥିଲେ, ଆଉ ଜବାହରଲାଲ ନେହେରୁ ଯିଏ ଲେଖିଛନ୍ତି ଚାଇଲ୍ଡହୁଡ୍ ସେ ଥିଲେ ଭାରତର ପ୍ରଧାନମନ୍ତ୍ରୀ। ସୋ ତାଙ୍କ ଦ୍ୱାରା ଲେଖାଯାଇଥିବା କିଛି ଜିନିଷ ଆମେ ପଢ଼ିବା, which will touch our heart and ଗୋଟେ ବହୁତ ବଢ଼ିଆ ଶିକ୍ଷା ଦେବ, and we will come to know about different writers, ସମସ୍ତ ରାଇଟରଙ୍କ ବିଷୟରେ ସଂକ୍ଷେପରେ ଆମେ ଜାଣିପାରିବା। ସୋ ଆମେ ପଦ୍ୟ ଗଦ୍ୟ ବିଷୟରେ ଜାଣିଗଲେ। ଇନଭାଇଟେସନ୍ ଟୁ ଇଂଲିଶ 2 ସରିଲା। ବର୍ତ୍ତମାନ ଇନଭାଇଟେସନ୍ ଟୁ ଇଂଲିଶ 3ରେ କ'ଣ ଅଛି, that we can discuss. We will move to the invitation to English 3. So what is there in invitation to English 3? And one more thing I would like to request you all, I have already prepared videos for you. You can check on my YouTube channel, it is available. ସବୁ ଜିନିଷ ଷ୍ଟୋରି ଅଛି, ସମସ୍ତେ ଦେଖିପାରିବ। So next ଆସୁଛି invitation to English 3. It is completely grammar part. We should look after carefully. ଆମେ ଭଲ ଭାବରେ ଯତ୍ନ ଦେଇକରି ଦେଖିବାକୁ ପଡ଼ିବ, ଆକୁ ବା ଭଲ ଭାବରେ ପଢ଼ିବାକୁ ପଡ଼ିବ। Writing a paragraph, then developing ideas into paragraphs. It is completely based upon paragraphs, writing paragraphs. Paragraph केमती लिखा जाए, sentence केमती form होता है, से सब विषय। नेक्स्ट आउट हम राइटिंग पर्सनल लेटर्स एंड नोट्स। पर्सनल लेटर आमर केमती लिखा जाए और नोट्स केमती करा जाए से विषय अच्छे। राइटिंग एप्लिकेशंस, ऑफिशियल लेटर्स एंड बिजनेस लेटर्स। एप्लिकेशन केमती लिखा जाए, ऑफिशियल लेटर केमती लिखा जाए, बिजनेस लेटर केमती लिखा जाए। आई हैव ऑलरेडी प्रिपेयर्ड सम वीडियोज ऑन इट। मुझे समस्त प्रकार वीडियो बन सारी, यू ऑल कैन चेक इट। Writing telegrams, next one is writing telegrams, emails, personal advertisements and short notices. ये सब रहिला invitation to English 3 रे। The last using graphics, graphic use करिकर केमती आमे information देवा को हिते सेटा भी अछि। So next one is there invitation to English 4, which is grammar in context, complete grammar it is। I told you in the previous, पूर्वरु कहली तुमको countable and uncountable nouns। नेक्स्ट वन इज टेंस पर टेंस। टेंस आम जाना। देन मॉडल वर्ब्स, एग्जांपल ऑफ मॉडल वर्ब्स आई हैव ऑलरेडी प्रिपेयर्ड वीडियो। मॉडल वर्ब्स शाल, शुड, कैन, कुड, मे, माइट, दोज आर द एग्जांपल ऑफ मॉडल वर्ब्स। देन आसीबा प्रीपोजिशन एंड फ्रेजल वर्ब्स, आई हैव ऑलरेडी प्रिपेयर्ड अ वीडियो ऑन इट। देन द इंपेरेटिव्स, इंपेरेटिव्स कोन ताकू नेकरी आमे वीडियो बनाई सारछु। नेक्स्ट वन इज द लास्ट वन बट नॉट द लिस्ट, दैट इज द इंपेरेटिव्स टाइप्स ऑफ सेंटेंस रेट आसीଯିव जोटा को आमे जानि परिबा। सो दिस इज कंप्लीटली knowledge, this is the complete knowledge I gave you through this video, that which is completely based upon the syllabus of plus 2 first year art, science and commerce English course। आमे कोई परिबा एटा केवल इंग्लिश पई जो टॉपिक को आगला, and videos regarding this syllabus I have already prepared, you can check it।